नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस स्पेशल प्रोग्राम वर्ल्ड इन एक्शन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, वार्तिक टीवी का ये वीकली फीचर है जिसमें हम देश दुनिया की तमाम खबरें लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। इस सप्ताह चूंकि भारत की डिप्लोमेसी, भारत की कूटनीति बहुत ज्यादा चर्चा का विषय रही है, इसलिए आज का ये जो प्रोग्राम है वो हम समर्पित कर रहे हैं, डेडिकेट कर रहे हैं भारत की जो डिप्लोमेसी है उसका ट्रांसफॉर्मेशन जिस तरह से हुआ है उसके ऊपर आज हम बातचीत कर रहे हैं। और आज का जो विषय वस्तु है हमारी बातचीत का वो यही है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर डिप्लोमेसी। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे भारत के राजनयिक रहे रिटायर्ड आइएफएस श्रीमान B.R.Muthu कुमार जी, साथ ही भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर श्रीमान अजीत कुमार सिंह जी, और देश के मशहूर करंट अफेयर्स एक्सपर्ट श्रीमान ललित अंबरदार और फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट डॉक्टर TS चंद्रशेखर जी हमें इस आज के कार्यक्रम में ज्वाइन कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज इस प्रोग्राम में हम बातचीत इस पर करेंगे कि हाल के कुछ वर्षों में भारत की जो डिप्लोमेसी है वो किस तरह से उसमें बदलाव आए हैं और किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। बात चाहे भारत चाइना संबंधों की हो या पाकिस्तान के संबंध में हमारी नीति हो, इस अरसे में किस तरह का बदलाव दिखाई दे रहा है। और देश की आजादी के तुरंत बाद आप यदि देखते हैं तो जहां पर हमने बाइपोलर ग्लोबल सिचुएशन में, खास तौर पर कोल्ड वॉर के दिनों में, कोल्ड वॉर के दौरान जिस तरह नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात रखी, कालांतर में उससे हम पर क्या इंपैक्ट आए, क्या इंपैक्ट हुए, क्या बाद में अलग थलग पड़े या कि उसका फायदा हमें मिला। एक तरफ हमने तटस्थ विदेश नीति का सहारा लिया, तटस्थ विदेश नीति अपनाई, वहीं दूसरी ओर बाइपोलर वर्ल्ड के एक पोल सोवियत यूनियन से दोस्ती रखी। इस बीच दूसरे सुपर पावर्स ने हमारे आसपास किस तरह के खेल किए और हमें चाइना और पाकिस्तान में उनके इस खेल के नजारे भी देखने को मिले। इस सप्ताह चूंकि दिल्ली में रायसीना डायलॉग्स में भी कई तरह के नवाचार की बातें सुनाई दी हैं जिनसे भारत की विश्व के प्रति रीति नीति और बदलते वैश्विक परिदृश्य में हमारी स्थिति के भी गहरे और दूरगामी असर परिलक्षित हो रहे हैं। ऐसे में जबकि हमारे विदेश मंत्री के साहसिक बयान इन दिनों चर्चा में हैं, वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत की कूटनीति और विदेश नीति का नया विमर्श भी घड़ने में लगे हुए हैं। चाहे अमेरिका के ह्यूमन राइट्स के चैंपियन के बतौर भारत को नसीहत देने का मामला हो या कि रूस यूक्रेन जंग के बीच भारत पर रूस से व्यापार न करने का दबाव हो, इन सभी मामलों में भारत ने अपनी स्थिति को साफगोई से न केवल रखा वरन अपने हितों के लिए अपनी पॉलिसी को पूरी तरह से डिफाइन भी किया है। बात चाहे अमेरिका की हो या फिर यूरोपीय देशों की, भारत ने अपना पक्ष न केवल स्पष्टता से रखा बल्कि यह भी जताया कि भारत को कोई भी डिक्टेट नहीं दे सकता। भारत अपनी रीति नीति अपनी टर्म्स पर बनाना और उसे लागू करना जानता है। आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे इसी विषय वस्तु पर। विदाउट अ फर्दर ड्यू, नाउ वी वांट टू वेलकम आवर एस्टीम्ड गेस्ट्स। जैसा कि हमने आपको बताया, आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजनयिक श्रीमान B.R.Muthu साहब, साथ ही रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर श्रीमान अजीत कुमार सिंह जी, और करंट अफेयर्स के बहुत ही मशहूर एनालिस्ट श्रीमान ललित अंबरदार, और फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट डॉक्टर TS चंद्रशेखर जी। आप सबका स्वागत है, नमस्कार। तो प्रोग्राम की शुरुआत हम अजीत कुमार सिंह जी से करवाना चाहते हैं और उनसे इस विषय वस्तु पर पहला जो उनका परसेप्शन है वो रख पाते हैं, फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सिंह साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? Can you volume Can you hear me, सिंह साहब? yes I can hear you। नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले आज के प्रोग्राम की जो शुरुआत है वो आपसे कराना चाहते हैं, और ये जो आज का हमारा विषय वस्तु है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर डिप्लोमेसी, इसके ऊपर पहला पर्सपेक्टिव आप रखिए।
समस्त पैनलिस्ट को नमस्कार। वैसे मैं फॉरेन अफेयर्स का कोई एक्सपर्ट नहीं है और हमारे साथ हमारे जेएनयू में वरिष्ठ थे श्री मुत्तु कुमार जी, जो इंडियन फॉरेन सर्विस में 30+ ईयर्स इन्होंने काम किया है, कई जगह एम्बेसडर भी रहे हैं। तो उनके सामने मेरा बोलना वैसे सूरज के सामने दिया जलाने जैसी बात होगी, लेकिन चूंकि आपने आदेश दिया है तो मैं टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता हूं। पिछले करीब 1-2 वर्षों में, विशेषकर जब चाइना के साथ अपना स्टैंड ऑफ हुआ, पहले डोकलाम में हुआ था 2017 में या 18 में, और उसके बाद स्पेसिफिकली जब रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इस दौरान आप देखेंगे कि भारत के विदेश मंत्री जो हैं श्री जे शिवशंकर जी, ये भी हमारे जेएनयू के ही हैं। तो मैं भी जेएनयू का हूं, मुत्तु कुमार जी भी हमारे वरिष्ठ रहे हैं और मेरे हिसाब से शायद मुत्तु कुमार जी और अपने विदेश मंत्री ये शायद बैचमेट्स हैं, जहां तक मुझे याद मतलब आ रहा है। तो मैं 1-2 चीजें बताना चाहूंगा कि यूएसए में अपने विदेश मंत्री जी ने क्या कहा था। 2 बातें थी, 2 मुद्दे थे। एक था कि वेस्टर्न जो कंट्रीज का अलायंस है, यूएसए वगैरह, ये चाह रहे हैं कि रशिया से भारत ऑयल नहीं खरीदे। और दूसरा इशू था कि थोड़ा जो दबी जुबान में बात हो रही थी कि ह्यूमन राइट्स के बारे में उन्होंने उठाया था, और दोनों में हमारे विदेश मंत्री जी ने बड़ा फर्म होकर उत्तर दिया। रशिया से ऑयल के बारे में उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत जो जितना ऑयल 1 महीने में खरीदता है, वो तो यूरोपियन कंट्री जो है हाफ अ डे, लंच तक जो है, दिन में जो लंच का पीरियड होता है, लंच तक जो है वो खरीद लेती हैं। और जो ह्यूमन राइट्स की बात उठाई गई थी, उस पे भी उनका बड़ा फर्म रिप्लाई था, रिस्पॉन्स था। उन्होंने ये कहा था कि भारत भी दूसरे कंट्रीज के ह्यूमन राइट्स को देख रहा है और उसको ऑब्जर्व करता है। तो एक तरह से टिट फॉर टैट ये दिया गया था, जवाब दिया गया था। और रिसेंटली क्या हुआ, 2-3 दिन पहले रायसीना हिल्स डायलॉग जब हो रहे थे, तो वहां पे बात उठी थी कि भारतवर्ष को पाकिस्तान के साथ इंगेज करना चाहिए। जो डायलॉग रुका हुआ है एक तरह से, वो होना चाहिए। और उस पे भी भारत ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में, अपने विदेश मंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में भारत की बात रखी। और एक और बात उन्होंने कही है पिछले कुछ दिनों में कि भारत को यह समझना चाहिए कि हम हैं कौन। दूसरे देशों से अफर्मेशन लेने के लिए, हाँ भराने के लिए, या वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, हमें खुद अपने बारे में, अपने भविष्य, अपना जो पास्ट है उसको देखते हुए, हमारी जो सिविलाइजेशन है उसको देखते हुए भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए। अंत में एक बात और कहना चाहूंगा मैं कि पिछले करीब 1.5-2 महीनों में आप देखेंगे कि अनगिनत फॉरेन डिप्लोमेट्स और हेड्स ऑफ स्टेट्स जो हैं या हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स इंडिया में आए हैं। तो देख रहा हूं कि काफी उथल पुथल एक तरह से मची हुई, या फिर फॉरेन पॉलिसी एक तरह से इंडिया की फ्लक्स में है और एक शायद नया डायरेक्शन ले रही है। और इस पे मैं निवेदन करूंगा कि श्री मुत्तु कुमार जी इस पे प्रकाश डालें। थैंक यू जी। तो अब हम चलते हैं मुत्तु कुमार जी साहब के पास। मोस्ट वेलकम। And if you are comfortable with English, then you can speak in English. And firstly, you can put the perspective. Then we will ask some questions as well. Okay, sir. Yeah.
Well, Indian foreign policy, well, the idea that it has transformed is not exactly the word I would use. I think the Indian foreign policy has maintained the national interest of India, and that is what is important. So there is I would rather say there has been a consistent, continuity and change. Continuity of the national interest is something that is central to our foreign policy. And notwithstanding which government has been in the past, the continuity of national interest is what we are focused on. And in the current situation with my dear friend and batchmate Jay Shankar, he has done a wonderful job for the country. That is all I can say. I'm not used to heaping praises on individuals, but long and short is when someone does a wonderful job for the country and maintain the country's interests, on this account, I'll maintain that Jay Shankar has done a wonderful job. I'm no subscriber to any ideology or a political party, but the national interest is what is my concern, and that's how I look at it. Now, the whole idea of everybody is focusing now is on India's position vis-a-vis Russia and the Ukraine. Now, here I must say that abstaining from the United Nations is not for Russia or for Ukraine or against Ukraine, but it is for India. The idea is that we have a long relationship with Ukraine and longer with Russia because it's a continuity from the Soviet days to Russian Federation post-Soviet days. And Ukraine has been, well, very much part of our focus also in our relations in that part of the world. Now, given this, I think one need not talk too much on transformation. I don't think that is the right word. I would say, yes, we are being more bold. We are being very, very definitive in what we are saying. And most of all, like I always refer to Jay Shankar as my comrade minister because in JNU everybody is a comrade. So my comrade minister has very emphatically stated that it is not, something new, but we know, and nobody need educate us on what we are. After all, we are an old civilization. We have taught the world many things, and so therefore, in terms of foreign policy, I think it's in good hands at the moment, and there's no doubt that you can differ with him. Some people have differed, saying that, well, why can't we be more categorical and accuse Russia of being the aggressor? I don't think I will get into that because Russia-Ukraine relationship is something that Russia and Ukraine will also have to handle. That war is not our war, but it is of concern to us because of the international ramifications. And when someone tells us that not to buy Russian oil or Russian gas or whatever be Russian equipment, I think that is pushing us to the edge, and that is where we are firm and we are not going to be pushed. राइट तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये पहला राउंड रहेगा। इसके बाद में सब्जेक्ट एक्सपर्ट के तौर पर मुथु कुमार जी से हमारे जो एस्टीम्ड पैनलिस्ट हैं वो कुछ जानकारी चाहें तो वो भी जानकारी ले सकते हैं। अब हम चलते हैं अंबरदार साहब के पास में। स्वागत है। So before that, one thing, Sudhakar, please. You want to join? The General Sudhakar ji join करने के लिए पूछ रहा है. So we will send the link right away. We are sending him the link. Yeah. सुधाकर साहब को लिंक भेज दिया जाए। तो अंबरदार साहब को चर्चा में लाना चाह रहे हैं। जी अंबरदार साहब। देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं कि डिप्लोमेसी जो है नेचुरली इट हैज टू बी इन द नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्र के इंटरेस्ट में ही होगी डिप्लोमेसी। मैं एक थोड़ा सा आपके प्रश्न का उत्तर उसके ऊपर आने से पहले एक थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा जो इसके संदर्भ में जुड़ा हुआ है। अभी लॉकडाउन से पहले मैं ना कई स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के और काउंटर टेररिज्म के प्लेटफॉर्म से भी जुड़ा हुआ हूं। तो एक सेमिनार हो रहा था बालाकोट अटैक की एनिवर्सरी
के उपलक्ष्य में वहां पे एक सेमिनार हो रहा था। मैं सुन रहा था कि वहां के जो हमारे नेवी वाले वो बता रहे कि देखिए जी हमने उस वक्त हमने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, ये किया वो किया। तो नेचुरली उस बालाकोट ऑपरेशन में जो हमने वहां पे पाकिस्तान के अंदर वो अटैक किया था, वो उसके अंदर एयरफोर्स का और एयरफोर्स का रोल तो था ही था, साथ में नेवी का भी था और आर्मी का भी था। जो हमको तो सिर्फ ये समझ में आता है कि हमने जो देखा आम लोगों ने, हमने जो कि भाई एयरफोर्स में जाके वहां पे बम्बार्डमेंट की थी, लेकिन नेवी और आर्मी का उसके अंदर इक्वली इंपॉर्टेंट रोल था, जो जैसे बैक स्टेज था जो हमको नहीं दिखाया गया। तो वहां पे आर्मी के जो ऑफिसर्स थे वो क्लेम कर रहे थे कि हमने ऐसा किया, और नेवी वाले वो अपने आप को नेचुरली क्लेम कर रहे थे कि उन्होंने कैसे कैसे इसमें योगदान दिया, जितना बोल सकते थे, जितना पब्लिक अफेयर्स में आना चाहिए था इंफॉर्मेशन, वो बताया। इसी प्रकार से वहां पे कुछ सीनियर डिप्लोमेट्स भी थे और एम्बेसडर्स भूतपूर्व रह चुके थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने भी इसके अंदर, क्योंकि डिप्लोमेसी का भी इसमें बहुत बड़ा किरदार था, वो उन्होंने कैसे हैंडल किया। तो मैं ये सब सुन रहा था, तो मैंने सबको आदरपूर्व कहते हुए इनमें बोला कि आप ही डिप्लोमेट थे पहले, यही डिप्लोमेटिक कोर था, यही आर्मी थी, यही नेवी थी। तो आज तक हमने क्यों नहीं सोचा कि हम बालाकोट जैसी स्ट्राइक कर सकते हैं, ताकि पाकिस्तान को एक डेटरेंट हो कि आगे से हमारे यहाँ पे वो ऐसी वारदातें ना करे। ऑल्दो इट्स नॉट अ डेटरेंट फॉरएवर, लेकिन हमें कुछ तो प्रोएक्टिवली करना पड़ेगा ना इसके अगेंस्ट। तो आप ही सब थे, यही अनुसंधान थे, हमें गर्व है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ऊपर, हमारे डिप्लोमेट्स के ऊपर, लेकिन पहले ये कैसे क्यों नहीं हुआ। तो मैं ये कह रहा था कि जो आपके जो नैरेटिव के अंदर जो आप बोल रहे हैं, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसिंग है, वो है पॉलिटिकल स्टैंड, पॉलिटिकल बैकिंग। आपने जो कुछ किया क्योंकि आपके पास एक पॉलिटिकल इनिशिएटिव था, पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शंस थी, गवर्नमेंट ने आप जो भी हो आपको फ्री हैंड दिया, एक टारगेट दिया, एक बताया कि हमको ये करना है, कैसे करना है आप एक्सपर्ट्स हैं, आप उसको संभालेंगे। तो मैं समझता हूं किसी भी डिप्लोमेसी में, किसी भी राष्ट्र की, हमारे में भारत की हो, किसी भी मुल्क की हो, डिप्लोमेसी में जो पॉलिटिकल सेटअप एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स होता है, उनकी क्या नीति है उसके ऊपर निर्भर करता है। हम भारत जैसे इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद हम थोड़े आइडियलिस्टिक से हो गए। हमने सोचा हमें अंग्रेजों से भी क्योंकि हमें जंग नहीं करनी पड़ी, इन द सेंस दैट हमने जो क्लेम किया कि हमने एट्रीब्यूट किया कि हमारी आजादी जो हमको मिली है, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस जो हमको मिली, वो हमें महात्मा गांधी की नॉन वायलेंस से हमको मिली। तो इसलिए उसी आधार पे हमारी सारी विदेश नीति भी उसी पर आधारित रही कि भैया हम नॉन वायलेंट है, ये है वो है। तो पंचशील भी जैसे उभर के आया उसी पर था। इट्स अ वेरी आइडियलिस्टिक डिप्लोमेटिक पॉलिसी, जिसके ऊपर हमने चाइना के साथ काम किया, पंचशील के ऊपर काम करने के लिए कोशिश की, ठीक है। और यूएन में हम चले गए, दैट वाज द फर्स्ट एवर बिगेस्ट ब्लंडर हमने किया, जो पाकिस्तान के साथ जब हमारी जंग चल रही थी, पाकिस्तान ने जो हमला किया था, पहली बार हुआ दुनिया के अंदर एक जीतती हुई आर्मी, मार्चिंग आर्मी, उसको हमने अपनी जमीन आजाद कराने, पूरी तरह से आजाद कराने से पहले हमने रोक दिया। That means it's first time in the military history of the contemporary world that we stopped our marching army that would have liberated whole of Pakistan, occupied Jammu Kashmir and Gilgit-Baltistan, very strategically important Gilgit-Baltistan especially. But we took a stand because our political setup took a stand, and we decided to call for a ceasefire. And not only that, then we went to the United Nations. I think that was, there began the faulty foreign policy of India. And with that, हमारी जो पिछले 70 साल में, ये 2014 से पहले, इनफैक्ट 2014 नहीं, 2019 से पहले बात करो, 2019 से पहले भारत की जो विदेश नीति रही है, इट हैज बीन मोस्टली पाकिस्तान स्पेसिफिक। हमारा सबसे बिजी डेस्क जो रहा है वहां पे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री में, इट हैज बीन पाकिस्तान डेस्क। अमेरिका के साथ हमको मालूम था क्योंकि हम नॉन अलाइन में थे, वो भी हमारा एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव था, नॉन अलाइन रहे, ये जानते हुए कि रशिया, सोवियत यूनियन के साथ जो हमने एक पॉलिसी चलाई, आई थिंक दैट इज द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग, दैट गोज टू द दैट्स द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू आवर थिंकर्स इन फॉरेन पॉलिसी। जो हमने सोवियत संघ के साथ जो हमने गठजोड़ किया, वो आज तक बरकरार है। और 2019 के बाद, 2019 इसलिए बता रहा हूं कि 2014 से 2019 तक भी
प्रेजेंट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी वही नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के आधारित जो ब्यूरोक्रेट चला रहे थे वही चल रही थी। नहीं तो नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीतने के बाद सरकार में आने के बाद सबसे पहले वो पाकिस्तान में बिन बुलाए नहीं जाते, तो उनकी पॉलिसी भी वही थी विज़-अ-विज़ पाकिस्तान। तो 2019 के बाद हमारी जो एक रिवोल्यूशनरी चेंजेस आए, जैसे पहले चाइना के शी जिनपिंग को हमने वो झूले पे बिठाया, सब कुछ किया हमने, जो हमारी पुरानी नीतियां थी उसी के आधार पे चल रहा था सब कुछ ऑलमोस्ट, लेकिन वो सब चेंज हो गया। अब जो हो रहा है और आज की तारीख में अगर हम एलैबोरेट करें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन एक चीज और इसमें ऐड करना चाहता हूं। हमने अपने नेबरहुड में नेपाल एक क्लासिक एग्जांपल है, दैट इज द ह्यूज डिप्लोमेटिक नेग्लेक्ट। नेपाल क्यों? क्योंकि हमारी राष्ट्रीय नीति, पॉलिटिकल नीति थी सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म की, इसलिए हमने नेपाल को, चूंकि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, विश्व में एक ही हिंदू राष्ट्र था, we took it for granted, and we in fact in the face of it we took it for granted, but it was a total neglect just because we thought there is a total Hindu state. And हमें जो वहां पे नक्सल एक्सट्रीमिस्ट आए इस इंडियाज नेग्लेक्ट जो वो डिमांड कर रहे थे 50 के दशक से, वो डिमांड कर रहे हैं कि जो हमारी एक पॉलिसी है उनके साथ उसको मॉडिफाई किया जाए, ताकि वो जो नेपाल कुड हैव बीन अ स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट। हमने कभी उसका इनकरेज नहीं किया। तो मेरा जो तात्पर्य है, और आज की तारीख में जो सारा स्ट्रेस है, टेस्टिंग टाइम्स, उक्राइना और रशिया की जंग, इतने प्रेशर पड़े हुए, एंड आई गिव क्रेडिट टू द प्रेजेंट हेड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, दैट इज नरेंद्र मोदी। क्योंकि उनकी पॉलिसी है, उन्होंने उनको फ्री हैंड दिया है, लेकिन उन्होंने टारगेट सेटअप किए मेरे राष्ट्र के इंटरेस्ट के अंदर, ये मुझे चाहिए। हाउ यू हैंडल इट, you are experts, you are professionals, you carry your, but मेरा टारगेट ये है। इसीलिए जो आप देखते हैं बैलेंस ऑफ पावर, हमने इजराइल के साथ इतने साल हमने उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस ही नहीं रखे, और बाद में जब उनके साथ मिलिट्री स्ट्रेटेजिक हमारी पार्टनरशिप होगी, तब भी हम उनको डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन नहीं थी इजराइल को। हमारे फौजी, अब ये हम लोग अब जानते हैं इसके बारे में, तब भी जानते थे, हमारे फौजी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए इजराइल जाते थे, लेकिन हमारे उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे। हमने कई डेविस कप मैचेस हमने हारने दिए, हारने क्या दिए, वी लेट दोज मैचेस गो आउट ऑफ हैंड, हमने हार दिए या हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि वहां पे हम अपार्थाइड और ये इजराइल की वजह से उनको हम मना करते थे। मेरे ख्याल में इंडियन डिप्लोमेसी हैज कम अ लॉन्ग वे, एंड ऑल्सो एक जोड़ना चाहता हूं, पॉलिटिक्स तो है ही है जो गवर्न करती है आपकी कंटेम्पररी राष्ट्र प्रथम की नीति से फॉरेन पॉलिसी, एक सिविलाइजेशनल बैकग्राउंड भी होता है, जो मुझे लगता है कि उसका आधार जो आज की तारीख में बहुत ज्यादा हो रहा है, और वो होना भी चाहिए। हमारे सिविलाइजेशनल ईथोस जो है वो भी आजकल मेंटेन होते हैं। जैसे पहले हमने पूरे विश्व को ये बताया था कि हिंदुस्तान में अगर दिखाने वाली चीज है वो सिर्फ आगरा है, वो आगरा का ताजमहल, ठीक है। जो भी आता, इवन जो कितने भी हमारे आए लोग यहाँ पे, सब ताजमहल के सामने फोटो खिंचवाते थे। वो हमारी सिविलाइजेशनल नैरो थिंकिंग थी। दुनिया को हमने बताया नहीं कि ताजमहल एक छोटी सी चीज है, दक्षिण में एक छोटा सा मंदिर दिखाइए, कई गुना उसकी तारीफ होनी चाहिए। तो ये मैं समझता हूं 2019 के बाद से बहुत चेंजेस हुई हैं, और इन डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस के अंदर हम आजकल क्या गिफ्ट देते हैं और पहले क्या गिफ्ट एक्सचेंज होते थे, उसमें बहुत परिवर्तन हुआ। क्योंकि जैसे मैंने बोल रहा हूं, सिविलाइजेशनल एलिमेंट जो आया है हमारी फॉरेन पॉलिसी में, वो हमको मदद दे रहा है। और देखिए कैसे हमने अरब में, मिडिल ईस्ट के अंदर हमारी बैलेंस ऑफ पावर, देखिए बैलेंस ऑफ पॉलिसीज है। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर अमंग द मुस्लिम कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट, एंड आई थिंक विद ड्यू रिगार्ड्स एंड ड्यू कॉम्प्लीमेंट्स टू माय डिप्लोमेटिक कोर, the credit for executing these foreign policies must go to the head of the government, the person who is at the helm of the affairs. His being executed, that's very important element in our foreign policy, and that should always have been. Good. तो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के एमिनेंट मिलिट्री एंड डिफेंस एक्सपर्ट जनरल श्रीमान सुधाकर जी साहब, स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू जी। तो एक बार चंद्रशेखर जी के पास चलते हैं, फिर जनरल साहब के पास आते हैं। जी चंद्रशेखर जी। Good evening, and it's a very big compliment to have some of the most big experts in our discussion. Number one is I want to say
Mr. Ajeet Kumar Singh and also former Ambassador Muthu Kumar sir. I am also from JNU, but I am your very junior. I was in JNU from 1992 to 1997. I did my MA, MPhil, then I went to do my PhD in Korea. So that's the one past of mine. And second thing, India ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी, वो टॉपिक बात करने में बहुत डिफिकल्ट है आज, बिकॉज इंडिया का बायलैटरल रिलेशनशिप, इंडिया का रीजनल रिलेशनशिप, इंडिया का ग्लोबल रिलेशनशिप एंड इंडियाज मल्टीलैटरल रिलेशनशिप्स इज गेटिंग इवॉल्व्ड एंड चेंज फ्रॉम 2014 इन अ वेरी बिग वे. 1947 में आफ्टर इंडिया गॉट आवर इंडिपेंडेंस, India went with the Soviet bloc. I know Mr. Ambassador Muthu Kumar had served in Central Asian countries. I just saw his profile. But the most important thing was Indian leaders were very fascinated by Soviet Union. 1947 to 1991 यूनाइटेड नेशंस में कितना रशिया के बारे में वोटिंग हुआ था, वो सारा वोटिंग में इंडिया सपोर्ट किया था. इवन टुडे इंडिया स्टूड विथ रशिया इमोशनली, materially and physically, but that change is getting transformed. Democracy, globalization, development, उसके साथ में Indian people gave the majority to a political party where we have a very strong leadership. किस कंट्री में a leadership बहुत strong होता है, उस कंट्री में वो foreign policy strong हो जाता है. See, very important thing has to be understood is number one, India's relationship with Pakistan, India's relationship with China, which is utmost important, then India relation with US, then Russia, then India's relation with real politics of the world. देखिए 1947 से 2020 तक 22 तक किसी भी आदमी इंडिया का फॉरेन पॉलिसी रिसर्च किया तो, स्टडी किया तो, एनालिसिस किया तो, वन इंपॉर्टेंट थिंग इज मोस्ट ऑफ द लीडर्स इन द वर्ल्ड, they respected Indian leader, just not he is a leader of India, but he was a leader of 1.3 billion population of this country. They thought India is a civilization, India is a culture, India is a thought process and procedure which has never attacked any country in the world, and it talks about Ekadam Manvad, Antyodaya, Vasudhaiva Kutumbakam. That was the things which fascinated America. That was the things which fascinated Russia. आज एक इंडिया में एक पॉलिटिकल पार्टी 1947 से अभी तक इतना एक कंट्री के ऊपर डिपेंड कर दिया मिलिट्री इक्विपमेंट्स के लिए. इमोशनली वी आर बॉन्ड, वी हैव टू गो विद देम. इमोशनली सर्कस है, फिल्म है, बट रियल पॉलिटिक्स और what is the real politics? Globalization, 100 billion business with US, democracy, rule of law, questioning freedom of press. उसके साथ में इंडिया का immediate threat, China. So the question what Ambassador Jaishankar asked America was, आप 1962 में चाइना के ऊपर हम फाइट किया था, उस समय में आप इंडिया को सपोर्ट करने के लिए आया था, but 1971 में you did not come. What is your say 62 में चाइना के ऊपर आप आया था सपोर्ट कर, when India fought with China you came to support us, but India had problem with Pakistan in 1971, you did not come. So what is this? But the nature of war 1947 से 1991 तक सिर्फ लैंड, एयर, वाटर में फाइट कर रहा था. आज वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया डिप्लोमेसी की वजह से, वार भी चेंज हो गया. नाउ साइबर, उसके साथ में स्पेस,
We have now robots who are going to fight the war in India-China border. तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में इंडियन डिप्लोमेसी नेशनल इंटरेस्ट लेकर अमेरिका का सी ग्लोब मास्टर्स है, अपाची है, चिनूक है एंड राफेल है, उसके साथ में डिफरेंटली सुकोई, ब्रह्मोस, इसको कैसे हम मैनेज कर इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट आत्मनिर्भर बनाकर इंडिया इज नाउ द आंसर फॉर द वर्ल्ड बिकॉज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, political transformation, fighting disease, and not only caring about India but also caring about Vasudhaiva Kutumbakam. That responsibility सिर्फ लीडरशिप के लिए नहीं है, सारे 1.3 बिलियन पीपल के लिए ये डिप्लोमेसी से आया है. एंड डॉक्टर जयशंकर सर इज वेरी गुड एक्सपर्ट who has served in China and also America, and they'll take. I'll come back later, sir. Thank you. Okay, good. तो अब हम जनरल साहब के पास चलते हैं. जनरल साहब, स्वागत है. सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी, और मैं क्षमा चाहता हूं कि आज थोड़ा लेट हो गया. आज मेरे को जोड़ना नहीं था, लेकिन रहा नहीं गया कि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड और बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं हमारे को पैनलिस्ट को, इतने वेरी एमिनेंट पर्सनालिटीज एंड वेरी हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर ललित साहब and Dr. Chandrasekhar Saab and Mr. Muthu Kumar. I have read your articles, sir, and you are a well-known and profound personality, respected in the armed forces circle. And so as Ajit Singh Saab, I heard you yesterday. You are profound. Actually, so much to learn from each and every one of you. Gentlemen, मैं ये सब्जेक्ट एक ऐसा है, इसके बारे में मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ. मैं एक्चुअली एक स्टूडेंट हूँ, सीखना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं. अभी तक तो हम शायद यही चर्चा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में 1947 से लेके अभी तक क्या हुआ है इन आवर डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटी, इन आवर फॉरेन रिलेशंस विद आवर नेबर्स. शायद यही मैं जो अंदाज लगा सकता हूं. मैं एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं क्या होना चाहिए. हिंदुस्तान आज 1947 में नहीं है, ना कि 1991 में. शायद मेरे अंदाज से जो अहम बदलाव हुआ है हमारा डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटी में, ये शायद 1991 जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी के साथ साथ ये जुड़ा हुआ है. अगर हम कहेंगे कि लीडरशिप के साथ हमें किसी को आई डोंट मीन टू एक्चुअली कंटेस्ट एनीबडी एंड विदाउट बीइंग अंडरस्टूड एज कॉन्ट्रडिक्टिंग एनीवन, इट इज जस्ट अ थॉट प्रोसेस एंड अ पर्सपेक्टिव. लीडरशिप के साथ बहुत कुछ जो कहते हैं ना कि a lion, a leader who is leading a herd of sheep, if he is a lion, he is bound to succeed. But if there is a sheep actually leading a herd of lion, perhaps he may not succeed. But all I am saying is, इसके साथ बहुत सारे मसले जुड़े हुए हैं. एक है हमारा इकोनॉमिक माइट. इकोनॉमिक माइट जो है 1991 में, इफ आई रिस्पेक्ट माई मेमोरी, हमारा जीडीपी करीब करीब $260 बिलियन हुआ करता था. चाइना का था करीब 310 बिलियन. आज देखिए चाइना का कितना हो गया है, 14.7, कोई कह रहे हैं कि $18 ट्रिलियन, और हमारा 2.7 to 3 ट्रिलियन डॉलर की बात करें. दूसरा एक चीज हम भूल रहे हैं कि हमारा हिंदुस्तान का जो डायस्पोरा है, दिस ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस. आज के दिन में पूरा विश्व में इंडियन डायस्पोरा इज द मैक्सिमम. 32 मिलियन इज अ बिग नंबर, एंड दिस इज गोइंग टू राइज, एंड इट मे टच अ फिगर ऑफ से 50 million by 2030, or even more than that. By 2050 it may cross that figure and go even to touch a figure of 80 million to even beyond that, after about 100 million or so, or even beyond that. तीसरा चीज मैं ये कहना चाहता हूं, हमारा मिलिट्री माइट also has increased. It is directly related to leadership, what Dr. Chandrasekhar is saying. I haven't heard the other speakers. It also is related to our capability as an economy, as also the self-assertion and the confidence. आप देखिए 1967 के बाद, 1962 में जो होना था हो गया. 1967 के बाद आप मेरे को कोई एक एग्जाम्पल दीजिए जहां पे इंडियन मिलिट्री माइट हैज टेकन अ बैकफुट. 67 में मुंह तोड़ जवाब दिए. हिस्ट्री सही तरीके से ना लिखने के कारण
इसको सही, जनरल सगत साहब का जो कंट्रीब्यूशन है, इट हैज नॉट बीन हाईलाइटेड इन नाथुला एंड छोला। एंड इसके बाद जितने भी सारे वांगडोंग इंसिडेंट, आप बात करिए मालदीव्स वाला जो इंसिडेंट, और पवन का नैरेटिव अलग था, हम कोई कारण की वजह से अंदर गए थे लेकिन सिचुएशन पूरा बदल गया। उसके बाद आप सियाचिन ग्लेशियर का जो ऑक्यूपेशन है और जितने भी सारे हमारे मिलिट्री एक्टिविटीज हुए हैं, पर्टिकुलरली मैं वांगडोंग कहूंगा, पर्टिकुलरली मैं कहूंगा यांगसे सेक्टर, दोज हु आर कन्वर्सेंट विद दिस पर्टिकुलर कामिंग सेक्टर, और ये भी कहूंगा कि हमारा जो ईस्टर्न लद्दाख के आज के दिन में जो हमारा जो कैपेबिलिटी है, ये शायद दिस इज बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन एंड ऑल्सो एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ नॉर्मल लेमैन इंडियन सिटीजन। सो ये सारे मिला जुला के जो हुआ है। लेकिन एक पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहता हूं सुभाष जी, अगर आपकी इजाजत हो। प्लीज गो अहेड। मैं कुछ दिन पहले इसके बारे में कोई चैनल में एक चर्चा चल रहा था, मैं एक पॉइंट वहां पे बताया था कि हमें ये देखना चाहिए कि ये नहीं हमने क्या किया है और क्या कर रहे हैं अभी, हमें ये देखना चाहिए हमें क्या करना चाहिए। हिंदुस्तान को अगर हमें 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन अगर एक सुपर पावर नहीं, एक ग्लोबल पावर की बराबर हम मानते हैं, तो ग्लोबल पावर की बराबर हमारा डिप्लोमेटिक मिशन होना चाहिए। आज के दिन में रफ फिगर, आई डोंट नो, मैंने एक आर्टिकल लिखा था कोई एक लीडिंग न्यूज़पेपर के लिए, रफ फिगर वाज कमिंग टू अप्रोक्सीमेटली वी हैव अराउंड 162 और 92 मिशंस, डिप्लोमेटिक मिशंस। हमारे जो स्टाफ है ऑफिसर्स, दे आर अंडरस्टाफ्ड। The government of India needs to focus on this particular aspect. We need to actually enhance the cadre strength of our diplomatic missions. They are not adequately staffed. Today, the number one country in the diplomatic missions, to my understanding, is China. Thereafter US, thereafter UK, thereafter Russia, thereafter France. Likewise, India doesn't figure anywhere in the tenable list of leading a fortified kind of a diplomatic mission. We have, going by the Wikipedia, it is giving out 850, but my earlier past research has indicated we have just about 1600 to 700 staff who are actually manning this. We need to focus on this. The cadre strength has to increase, and also the content of the training which is being imparted to our officers, they are par excellent. They are doing a supreme job, whether it is United Nations, anywhere. I have traveled quite a large number of countries. Our diplomatic missions all over the world are doing a profound job. But we need to do much more than this. We need to tell people what India is. And above all this, there is a requirement of our identifying our own capability. Before we tell others, we need to, all Indians must know what India is. Unfortunately, we don't know what India is. We don't. Merely we stop our discussion at the level of 1.39 billion population. We don't know that we have the largest middle class population of 667 million. Minus COVID-19 के time में आप उसको -32, somebody has carried out a calculation in the global World Economic Forum, and they have subtracted 32 million from 667. That brings the net balance to 630 million middle class population. Anyone who is drawing, it ranges from the figure of 1.92 ke baad $10, $10 to $20, and 20 beyond $50. You can classify the middle class population. It means hell of a lot. The purchasing power parity within India gives us a huge market. Therefore, it may not be an export oriented, which we are focusing now. It definitely has got a domestic consumption is so high, the market is so huge that everyone in the world is getting attracted to India. So this aspect also has to be kept in mind when we discuss about our capability as our diplomatic capability as a nation state, so as to achieve the status of a global power, reckonable and tenable global power for times ahead. Back to you, Subhash ji, please. Right. तो अब हम नेक्स्ट राउंड में चल रहे हैं और नेक्स्ट राउंड थोड़ा ब्रीफ रखेंगे, और जैसा हमने पहले बताया भी कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मुथु कुमार जी हैं, हमारे एस्टीम्ड पैनलिस्ट। कोई उनसे बात जानना चाहें तो वो भी जान सकते हैं। अब हम अजीत कुमार सिंह जी के पास चलते हैं और फिर मुथु कुमार जी के पास चलते हैं। मुझे फिलहाल कोई विशेष एडिशन नहीं करनी है। मैं आपकी ओर से मुथु कुमार सर को निवेदन करना चाहूंगा
जी, तो हम एक हमारी तरफ से एक वो अपनी बात तो रखेंगे ही रखेंगे। एक थोड़ा सा इमोशनल सा एक सवाल है जो कि हमारे एक व्यूअर की तरफ से आ रहा है कि सीटो और सेंटो के जमाने में नॉन अलाइंड मूवमेंट तो ठीक था और वो शायद वक्त की यानी टाइम की जरूरत भी रही होगी, लेकिन क्या उसके बाद में जो असर हैं वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहे यानी कि ठीक रहे या नहीं रहे? Muthu Kumar ji, can you hear us? Is it? Oh, I did not know it was addressed to me. I'm so sorry. Well, Yeah. Indian foreign policy has been observed. It has traveled a long distance since 1947, but as founder members of the United Nations and founder member of the League of Nations, so we have had an excellent experience in international relations right through our modern history. Even as a colonial power, we a colonial country being colonized, we still were founder members of the League of Nations and the United Nations too. But the important thing is when we look back, well, I think India has come a long way, and I'm very happy that notwithstanding the very small cadre of foreign service and support staff, India has done rather very well. And I do not know what would happen if we have more people working. Maybe lots of them would be jobless because as the little cadre we have contributed a lot. So more people come means I think they may be a little jobless. So I leave it at that, and then if we need more people, I'm sure the government will recruit more officers and more support staff. That is what we need, most importantly. Now, looking back at the foreign policy, the way it has evolved, well, there was a time when we were just coming out of this colonized state. So we needed to develop our country, and to that extent, we were in need of help from any quarters. But unfortunately, we were misunderstood by the Western countries, and therefore, the socialist countries came our way, and then lots of things happened at what we call the friendship price. And leaving it, coming back to that from there to now, I think we have to look back at the stages of foreign policy, Nehruvian foreign policy, Shastri, Indira Gandhi, Narasimha Rao, and not to forget Vajpayee. And I've had the fortunate experience of having served very closely with Prime Minister Narasimha Rao and Sri Atal Bihari Vajpayee, very, very great leaders who gave their diplomats a free say, and we went about doing as per the mandate given. So, to that extent, the Indian foreign policy has been always playing to the contemporary needs of India, and I still maintain, and we all maintain, that the national interest is the pillar for us. And economics, and of course, if we look back again, what is foreign policy? Foreign policy has many aspects. One is the international relations, then we have the economic relations, then the political relations, where we participate in various forums. But most importantly, in any forum that we are, I think we have India in mind and India's case all the time. Now, looking at it from that point of view, yes, India could have done much better, but then see the the profile of the Indian population. We have to carry all of them along with us. So we can't leave anybody behind. So naturally, we in a democratic system, lots of things don't come forward because we deal with things democratically. And if China has progressed very fast ahead because
and it's one of the largest, rather the largest exporter of many things around the world. Well, we could have also done if we had sacrificed democracy, but I think democracy is very precious for us. It's part of our life, and foreign policy revolves around that. And we have had friends and friendly relations, and friendly relations is what has troubled us many a times. Today, America is friends with us, but in 1971 it was not. So, I do not know how to look back at our game plan, but looking forward, yes, the era are different, Nehruvian time or even Indira Gandhi. But one thing important is that Lal Bahadur Shastri, Indira Gandhi, and Vajpayee, to a large extent, took very strong positions for India, and I think that has served us well. While our Prime Minister Narasimha Rao focused a lot on economic reforms, and that has also given us the dividends. And of course, as far as we look back on the development of India, Narasimha Rao had Manmohan Singh, and Manmohan Singh and Narasimha Rao was the Prime Minister. And unfortunately, when Manmohan Singh was the Prime Minister, he didn't have a Manmohan Singh to deal with economic reforms. So that is how I look at it. Right, right. So you need a leader to lead you, and Right. categorical leaders are very important. And foreign policy, as I said in the past, we have in good Okay. hands dealing Okay. with. In the last but not the least, one another question is there that career diplomats के साथ में यदि कोई alternative substitute भी है क्या हमारे पास में, क्या क्या सोचते हैं आप? Sir, I do not know whether we have to look for substitutes. I think we have to respond correctly to anything that India needs. There's no substitute to correct us. Okay. And with that point of view, like for example, today we need to focus also a lot on defense issues, and basically defense issues means our soldiers in the most difficult regions need the best of support. Like I must say, I'm very sorry to say, we have also with us the defense expert. And I know, because I come from a military background, my parents, my great grandfather, for 7 generations, we have been with the what was Madras pioneers to Madras engineers, and and we served. So 7 generations have served one regiment, and looking back, and we have had war casualties in our family at every conflict, be it the First World War or Tipu Sultan's war, the Mysore War, and so many things. But long and short is that our defense forces are well looked after, but yet not enough. So from a foreign policy angle, we have to first understand our neighbors. And our neighbors, we must have friendly relations. And if we can't have a friendly relationship with our neighbors, then we are on constant tension on what to do, and it eats up on our resources. And of course, I have no doubts on our defense forces capability, and we are not. It's no longer the 1962 syndrome where we believed that nobody will attack us and we got attacked. But after 62, at least we know that there are people who can attack us, and we are prepared for that. So that Right. is the best part of it, and I think I leave the defense views to our defense expert, where Major General is around, and I'm sure he knows. I do not know the corps the Major General comes to, but I'm sure all our military forces, whichever corps they are a fighting member of the defense forces. Now, looking at that, now foreign policy has to also get some teeth from a military point of view. We must have military, because we can't ignore the military aspect of it when we are doing diplomacy, especially with China.
You see, and China, at least now we are taking along generals with the field and the officers in the field to join us in our dialogue with China. I think that's good. So well, I look forward to this thing, but Right. well, I can go on talking, but it's Yes, not yes. ratio. Thank you ओके so much. ओके, फेयर इनफ। तो चंद्रशेखर जी कुछ बीच में इंटरजेक्शन चाहते हैं या कि अपने राउंड में बात करेंगे? Yeah, no, I want to ask one question to Mr. Ambassador Okay. Muthu Kumar ji. From the point of view of viewers, number one was NAM was a failure because from Indonesia, which was a country, they were against India in many times in the United Nations to reality. Second important thing, transformation of Indian foreign policy. Is it completely China-centric policy? Oh, क्या रशिया के क्या ऊपर डिपेंड हुआ था? Now that has been completely changed towards China. Anything against China is not tolerated. Means anything against China, we are with them. So there is a transformation of complete foreign policy towards US or UK or anybody than against Russia. Thank you, sir. This is a question from viewers' point of view. That's it. मुथु कुमार जी। Oh, so I heard Dr. Chandrasekhar, and well, I would not say that non-alignment the non-aligned movement was a failure. It served its purpose for some time. Well, now if we think in terms of non-aligned movement, I think we are climbing up the wrong tree, because the non-aligned movement, the purpose, the Cold War and various things have also taken a different turn. Cold War today is not that it has ended and then a new one started. No. In between we have had a pause. Now we know. When I look back, the 1991 and post 1991, you'll find that NATO, while the Warsaw Treaty pact countries dismantled that military alliance, one expected NATO also to dismantle itself. And since we didn't belong to any bloc and therefore focused in our own modest way in our development, and while the foreign policy aspect of relations building with developing countries, or what is known as those days some referred to as third world, so non-aligned movement served its purpose, but I wouldn't say it was a failure at all. Well, if I have to do that, then I'll have to also to certify today and audit Nehru and say that he was a failure. Maybe from today's context of having to act categorically, Nehru was a failure. But then at that time, it was different. So even if I see these pictures of Broz Tito and Joseph Broz Tito and Nehru and Kamal Abdul Nasser, so they all had their own thing. So let us not go back and an afterthought. Yes, if we want, there are many failings in many countries and in our foreign policy particularly. But the important thing is that we have moved forward, and let us move forward. And the most important thing that India has in terms of thing is to have a good network of friendly countries, not necessarily allies. And on talking about allies, someone told me the other day that our future lies with our relations with America. I think the gentleman did not have that the historical background to our relations with America. America tomorrow, if anything happens, they will say not only with Pakistan, they would even throw sanctions on us and may not even give us spare parts for the American equipment we have bought, our hard-earned money. But still, America is capable of disabling our defense capability, because they have supplied us equipment. So we need solid friends who will stand by us on any situation, be it Russia, be it Ukraine, be it Belarus, anyone who's a friend will stand by us when we are in need is the thing.
Like I always say, even in JNU as a student, I used to say, I don't believe in God. I believe in friends and enemies. Friends are always there to take care of you, but when I hug an enemy, I can also get food. So these are the things. Our relations are Right. very, very important. How we build relations, and that is the essence of my thinking of foreign policy right through. Even as a student, of course, as I say, Jaishankar. If Jaishankar is talking about foreign policy today, I would rather say it is what is famously I would call as the JNU doctrine of international relations. No? A friendly relationship with all countries, malice to none, and keep developing India's interests. राइट, गुड। तो अंबरदार साहब के पास चलते हैं, ब्रीफ राउंड रहेगा, थोड़ा सा समय का अब सब ध्यान रखेंगे। जी अंबरदार साहब। मैं ये कह रहा था, जैसे अभी एम्बेसडर मुथु कुमार सर बता रहे थे अबाउट नॉन अलाइंड मूवमेंट, सही बात है। You cannot call it a totally failure because it served the purpose whenever it was needed, and it was led also by the, as I said, the political ideology of the people of the leadership that time. Well, after independence, so most of our leadership was very impressed and very inspired by Soviet Union system. So since we decided to be a socialist country, obviously the Soviet Union became our inspiration that way, and we pursued it. And I'm glad this one aspect of foreign policy has withstood the test of the time. Our friendship with USSR, and later on it continues to be the same way with Russia. I think that's very important. And second thing, what Mr. Muthu Kumar observed about America, and I've been saying on your platform as well, America has only one friend in the world, and that's America. So America can never, ever be a dependable friend. We have seen it, how it betrayed the people of Afghanistan when it wanted to seek a safe withdrawal from Afghanistan, and it did that, and it lowered the confidence of its own alliance partners in NATO. Even in South China Sea, Koreans and as well as Japan has second thought. Well, America will stand the test of the time when it comes to the need, and that I relate. I have said it before. Russia-Ukraine war is one of the ways Joe Biden is trying to gain the confidence of its partners in Europe, amongst NATO countries, by pulling Ukraine into this kind of a war with Russia. That's there. But then, we are here today discussing transformation of our foreign policy. Yes. It's not to critique. It's not to pick up faults in the previous policies. Yes. I think what all we do here is just introspection, because as somebody was referring here, some esteemed panelists were talking about change in the curriculum of our officers who are trained in foreign affairs. See, so therefore we'll have to think about some of the blunders, which I think I may be very using harsh word, but I think I also watch. I'm not an expert on foreign affairs, but then I keep watching the foreign affairs closely, and I just wanted to briefly touch on some of the blunders that were committed. Number one was Nehru's. As I said, we failed totally vis-a-vis China. And then before that, in 47, we stopped our army. When it was a winning army, and it happened for the first time that we stopped them. And we have this 70 years old lingering problem with Pakistan. And I think it's not only diplomatic relations with Pakistan, naval relations with Pakistan, is because we lost that strategic importance of Gilgit-Baltistan. If only we have, and I'm sure that's going to be a strategic target destination for our future policies, that we have to liberate Gilgit-Baltistan. That's very important for us, and we lost that. Second was, and then vis-a-vis China, we did not develop infrastructure along Northeast, only because we fear the Chinese will use the same infrastructure to reach Delhi. So that, and it was almost a public domain. This policy was in public domain. Then 65, we gave a very hard won Hajipir Pass, with due regards to Lal Bahadur Shastri ji. I'm sure there were military advisors, there were diplomats in that, with due regards to everybody. I don't know what forced us to give up on Hajipir, which was strategically very, very important element. It was an asset for us, and we have never been able to regain that. I don't know, we have to regain it one day, but we lost that as a dominance. It was a asset of dominance in that sector. We lost it. Then came 71, yet another blunder. You exchanged 90,000 Pakistani prisoners for nuts, just because that juggler called
Zulfikar Ali Bhutto, he assured us that he will compromise on Kashmir one day. And my diplomatic sense that time, I again say this is because the leadership failed to understand and underestimate the importance. You returned 90,000 prisoners who should have been in under normal circumstances. Those 90,000 prisoners should have been tried for having committed crimes against humanity in East Pakistan. They butchered, were involved with rape, murder, and mass murder. And we treated them like prisoners of war and let them go. And with honor and dignity, we returned them without gaining anything diplomatically. That was a blunder. And then Narasimha Rao goes all the way. And I regard Narasimha Rao, when we talk about globalization, Narasimha Rao pioneered the globalization of India. And he was himself a very good diplomat. I'm told, I know, he knew so many languages. He would converse with foreign leadership in their language, foreign languages, without using an interpreter. That man goes all the way to Burkina Faso to offer Kashmiri Islamists, sky is the limit. I don't know what kind of diplomacy that was. You wanted to offer moon to Kashmiri Islamists, but why did it have to be on the soil of a foreign country far away in Africa, in Burkina Faso? Which, by the way, I don't know, Narasimha Rao should be knowing it by now, it's an Islamic country now, Burkina Faso. Similarly, Vajpayee's Agra. What were you doing in Agra? Thank God that esteemed diplomat who Musharraf has mentioned many a times that we didn't know that Indian foreign policy is run only by bureaucrats, because that bureaucrat intervened. Otherwise, what we were about to sign in Agra, it was disastrous. And then Manmohan Singh, Sharm el-Sheikh agreement. Who were the diplomats involved in that? What did we sign on Sharm el-Sheikh? And then again, Manmohan Singh, what was left between Musharraf and Vajpayee, it was carried forward by Musharraf and Manmohan Singh. There's a strong rumor, I don't know, I have not heard any denial from Congress party till date, that Manmohan Singh had almost prepared his Nobel Prize speech, because that was a kind of compromise we were about to sign on with Pakistan. And Kasuri has been visiting India. I have heard him. In fact, I have disrupted those seminars when he would tell us in India Internet Center in Delhi. Last time when he was a couple of years ago, he says, you compromise on Kashmir. These were almost the words. You compromise on Kashmir, otherwise we'll not be able to hold the jihadis, so many of them who just want to cross over and target you. That was the kind of blackmail. We're about to sign it. So even then I talked about Narendra Modi, who advised him to attend this Nawaz Sharif's family function on return from Afghanistan. And these things have to be studied. This is a kind of introspection. We must know where we went wrong. But as I said, one of the best things that Indian diplomats did was to continue our alliance with Northern Alliance in Afghanistan. The continued diplomatic recognition to Northern Alliance, I think that's one of the best things that our foreign policy men and women manage all these days. So that's, I think, time is short. Right. And I repeat my respect and honor to everybody here. It's not to criticize. We're only retrospective. We are not here discussing. So that my cadre who are going to be, you see, it's not only Jai Shankar who speaks now. He's a professional diplomat. He speaks now about it. But imagine freshly appointed diplomats sitting in UN. They speak the language that a nation of 1.3 plus billion people must speak. Yeah, now it has been started. They're just recent recruits because they have political backup. They have instructions. Talk to the people, hold your eye contact with whoever is in front of you, hold the dignity. And as I said, civilizational background, civilization, emphasis on your civilization background, that gives you so much more. That's the biggest moral booster is when you claim you have a civilization background, you adhere to it. I think that's very important aspect of our now what the foreign policy is. Definitely that is inner strength. So अब हम चलेंगे चंद्रशेखर जी के पास, बहुत ब्रीफली रखिएगा, देन जनरल साहब के पास आएंगे। Sir, history always judges what is good and what is bad. And in the very future, we'll see the results. That is number one. Number two, always मैं discussion में बोल रहा था, foreign policy में there is no friend and no enemy. It's only national interest. So now India's foreign policy transformation, it is necessary
because India wants it or not, but वो अभी reality है. India has to think about China, who is our immediate threat, and also we have to think about South China Sea, our small, medium, our island countries के लिए क्या threat हो रहा है वो देखना है. And very important, transformation of foreign policy means कोरोना वायरस आने के बाद में political crisis in Sri Lanka, crisis in Nepal, अभी बहुत foreign exchange crisis हो रहा है. And in case tomorrow if the losing Russia in Ukraine, if they use a small nuclear bomb, what will be India's position in this world geopolitics? That is the way India's transformation of politics will happen. Thank you very much. Right. जनरल साहब के पास चलते हैं. जी जनरल साहब. मैं तो सोचा आप शायद मेरे को लास्ट रखेंगे. I am a student. Yeah, it's last now we are concluding. The Ajeet साहब है, he's a senior administrator तो. No, but he has given his round to Ambassador साहब. Thank you so much. Must thank Mr. Muthu Kumar, since it has come from the panelists, one of our distinguished panelists. I must clarify, I am from infantry. मैं महा रेजिमेंट का हूँ. मैं कर्नल ऑफ महा रेजिमेंट 3 साल के रह चुका हूँ. फौज में 38 साल नौकरी करने के बाद आई हैव एक्सपीरियंस कॉम्बैट. JNK वैली में 3 टेन्योर रह चुका हूँ. कारगिल में सर्व कर चुका हूँ. मैं सियाचिन ग्लेशियर में इन द थिक ऑफ ऑपरेशन विजय, तुर्तुक सब सेक्टर में आई हैव फेस्ड बुलेट इन नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर. I have also been a military observer in Sierra Leone, where I managed to save a Pakistani officer under critical situations, okay, despite the fact that they don't like us. So my exceptional, I would say, service has been along the northern border in all 3 sectors. Presently, I am doing PhD after my retirement to find a solution for settlement of Indo-China border. This is one part, just to answer, because if the query has come from a panelist, I am sure the viewers also would be having the same query. To answer, क्योंकि time बहुत कम है, Dr. Lalit साहब ने जो point दिया था, I am the panelist who gave that point. The structure, the curriculum of or the course content of our future diplomatic leaders need to be considered, needs to be revised from time to time. Why? At this point, very emphatically, change is the only constant which has to be respected by one and all. If India has to emerge as a global power, then we need to constantly evolve ourselves. When we say evolution, it means that we need to address the global issues in a global perspective. We need to address the regional issues in a regional perspective in terms of extended neighborhood. When it comes to the immediate neighborhood, they have a different perspective altogether. So therefore, we need to change. When Mr. Jaishankar speaks abroad, या हिंदुस्तान में जब बात करते हैं, it is not Mr. Jaishankar speaking. It is a resurgent India who is voicing the language and the expressions of the new India. This is the language of the new resurgent India. When he's speaking within the country, he's also speaking as a resurgent India, giving a message not only to the citizens of India, but also to the citizens of this beautiful globe. There is a requirement of arresting the polarization in the world. Each country is so self-centered that they are only thinking ahead with their own objective, own safety, own interest. Nobody is thinking about any international cooperation. So here I would like to flag a point. India, by virtue of having come a long way, by virtue of having gained credibility, everything is falling in a natural manner on the lap of India. The present leadership has discharged its responsibility in a significant manner. He has a tremendous opportunity to showcase India as a top-class leader, to give some direction of peace, harmony, and stability, that the entire global order gets back to some kind of a progressive, forward-looking developmental path. Thank you. Back to you, please. Right. अमरदार साहब कुछ कहना चाहते हैं, फिर प्रोग्राम हम कंक्लूड करते हैं. Briefly, I will be betraying my commitment to the cause if I don't speak it now. There are esteemed panelists here. I also want to refer to the Nehru-Liaquat Ali Pact. Yes. What drove Jawaharlal Nehru and my then diplomats and then Foreign Affairs Ministry to
to drive the last nail in the destiny of Hindus and Sikhs, that India betrayed and India abandoned to the mercy of Pakistani jihadists, knowing well Pakistan was created in the name of Islam. Pakistan was created when on 14th of August 1947, millions of India-born millions, they betrayed their motherland in the name of Islam, in the name of two-nation theory, knowing all that, knowing what Hindus and Sikhs suffered in the streets of Lahore, and we go and sign a pact with Liaquat Ali Khan, telling them, you take care of your minorities, we take care of your minorities. I think that is the worst possible blunder we have committed. We committed a sin. I wasn't that time then. I think we have collectively failed, sinned, because we abandoned those Hindus and Sikhs in Pakistan, and till now, till 2019, till CAA came into practice, we never ever talked about the continued genocide of Hindus and Sikhs in Pakistan. 24% population is reduced to 2%, and it never emerged from our North Bloc or South Bloc. We never talked about the genocide of Hindus and Sikhs, while as we did not have relation in the name of apartheid, human rights with so many countries. We compromised on our national interests, but we ignored and abandoned and chose silence, criminal silence, about continued genocide of Hindus and Sikhs in Pakistan. Not only on diplomatic core, not only on leadership, I think we, India as a nation, we sinned that time. Right. तो ये था हमारा प्रोग्राम, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरह से इमर्ज कर रही है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए थे देश के बहुत ही मशहूर डिफेंस एंड आर्मी एक्सपर्ट जनरल सुधाकर जी साहब, एम्बेसडर B.R. मुथु कुमार जी साहब, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर श्रीमान अजीत कुमार सिंह जी साहब, देश के जाने माने करंट अफेयर्स के एक्सपर्ट श्रीमान ललित अंबरदार साहब, और डॉक्टर TS चंद्रशेखर साहब जो कि फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो ये था हमारा कार्यक्रम वर्ल्ड इन एक्शन का एक स्पेशल एडिशन हम आपके समक्ष लेकर आए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर डिप्लोमेसी। आपने हमारे एस्टीम्ड गेस्ट को सुना, और आपसे भी हमारा आग्रह है कि इस तरह के जो इश्यूज हैं इनके ऊपर अपनी पैनी नजर बनाई रखिए। किस तरह की चीजें चल रही हैं, किस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, क्या कमियां हैं, किस तरह की हमने हिस्ट्री में भूलें की हैं, किस तरह से हिस्ट्री को ठीक किया जा सकता है, ये भी एक इश्यू है जिसके ऊपर हम लगातार आपके समक्ष इस तरह के प्रोग्राम्स लेकर आते रहेंगे। आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।